हेलो गाइस, दिस इज दी भरत जैन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द यूथ इन इंडिया विल बी फेसिंग। मेरे एज के, मैं अभी 10th में हूँ बाय द वे, मेरे एज के बच्चे, मेरे से 2-3 साल बड़े बच्चे या मेरे से 6-7 साल बड़े बच्चे भी, every young person in India who is finding their career, who's looking out for themselves, who's trying to build something out of themselves, will face this problem. ठीक है, तो इंडिया में there is something very popular which is writing competitive exams. तो दो competitive एग्जाम है इंडिया में जो लाखों लाखों बच्चे लिखते हैं, which is why these exams are some of the hardest exams in the world. First है JEE, which is to get into engineering and IITs, and second is UPSC, which is the Union Public Service Commission का exam, जो is which is to get into civil services. Now, why am I making a video on this is to address a very important problem which every person who is aspiring to do this might face. ठीक है, तो बहुत लोग के मन में जो जेई कर रहे हैं, या बहुत लोग के मन में जो यूपीएससी कर रहे हैं, एक ऐसी फॉल्स इमेज बन जाती है कि जेई एक बार क्लियर हो गया फिर तो ज़िंदगी सेट है, फिर तो आईआईटी में चले गए, फिर तो करियर सेट, सब सेट है. Now, why is having this image wrong is what I'm going to tell you here, and how that false created image in your mind can ruin your future is what I'm going to discuss in this video. ठीक है, तो बिफोर दैट जेई का जो एग्जाम है, विद यू हैव टू राइट 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, एंड यू हैव टू राइट 2 एग्जाम्स, जेई मेंस, जेई एडवांस, टू गेट इनटू आईआईटी. ठीक है, जेई इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, अभी अगर कोई चीज़ इतनी हार्ड है जिसको क्लियर करने के लिए आपने इतनी मेहनत करी, तो किसी के मन में आएगा कि हाँ, इतनी मेहनत करी, इसके बाद तो फिर सब आराम है, आराम है. बट दैट इज रॉन्ग. ठीक है, अगर लाखों बच्चे भी लिख रहे हैं, उसमें 1000 लोग भी आ रहे हैं, ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड बिकम सक्सेसफुल. दैट इज वॉट पीपल फॉरगेट टू कैलकुलेट. ठीक है, 1% of the world become successful, not 1% of people who are getting into IIT, not 1% of all the aspirants of JEE. 1% of the people become successful. ठीक है, IIT में घुसने के बाद, IIT is any college like other, it is a very prestigious college, yes, but it is still any other college. You have to still build yourself. What people who are writing competitive exams forget to do is build themselves. ठीक है, वो लोग सब्जेक्ट का पूरा पढ़ लेंगे, उनके सामने आप कोई भी फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की बुक दे दो, या यूपीएससी वाले की कोई भी टेक्स्ट बुक खोल के दे दो, उनको रट्टा होगी, उनको सब मालूम है कि कहाँ पर क्या है, उनको पूरी नॉलेज है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, सब है, पर उनके पास विजडम नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है जिससे वो अपने आप को ग्रो कर पाए. ठीक है, now although they have gotten into one of the most prestigious colleges in the country or in the world, they are still not able to become successful. Why? Because during the process of trying to clear an exam and trying to by heart the books, they have forgotten to create a person, and they have forgotten to aspire to become a good human being, to become a skilled professional person, which is a huge problem that people might face because they forget this. ठीक है, हम लोग के लिए एक रेस है कि 15 लोग बच्चे लिख रहे हैं, मेरे को उनके साथ सब पढ़ना है, जितना जो ज़्यादा पढ़ लिया वो क्लियर कर लिया. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो करने से ऑल दो यू विल क्लियर जेई, ऑल दो सोसाइटी के लिए योर लाइफ इज सेट, बट खुद के लिए you will not become successful because you're not able to build yourself as a person. Now, I thought this was a very concerning and important problem. इस फील्ड के ऊपर, जेई या यूपीएससी के ऊपर और वीडियोस भी इस चैनल में मैं डालूंगा, बिकॉज आई पर्सनली आई एम इंटरेस्टेड टू डू दिस थिंग्स. एंड to overcome these problems, the best thing is to do is what I always say, the best thing to tackle any problem is to think. ठीक है, so I would suggest you all think about this issue, and if you're aspiring to become an IAS officer or an engineer and aspiring to write any competitive exams, do not forget to build yourself through the journey of clearing these exams. That is it for today's video, guys. Thanks for watching.